Today, a very beautiful topic I have brought it here, and everyone we face this problem, especially in our country, India. हमारे देश में हम अक्सर देखे हैं कि हम बहुत बातें करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है, लेकिन आज उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 5 दायरों में हम समझेंगे। इन 5 एंगल वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर लैगिंग एंड व्हाट वी नीड टू ब्रिंग ऑल्सो, so that the education system in our country also can be one of the best. Earlier it was, अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो हमारे तक्षशिला, जहाँ पे चाणक्य जैसे महान गुरु थे, चंद्रगुप्त जैसे शिष्य थे, द्रोणाचार्य की बात करें, अगर हम अर्जुन की बात करें, तो ये सब बहुत एग्जाम्पल्स हैं. But we have to learn a lot of lessons how they were doing earlier and what is missing right now. So I could say that a lot of confusion is there, which we need to just figure out, and we have to bring a new method in our teaching which we are aware of. हमें जानते हैं, बट लेकिन उसको करेक्शन का टाइम आ चुका है, जिसमें सबसे पहले चीज़ है जो हमारी कंट्री में यू कुड से दैट व्हेन वी गो टू द स्कूल, वेदर द पेरेंट, टीचर and even the kids should understand, that is lagging of understanding about multiple intelligence. One of the best, I could say, that you have must be heard the name also, Howard Gardner, who was a great psychologist. So he has written a very good book actually, and I feel that every parent should read, every teacher should read, and every child also should understand we all are unique. हम हर कोई एक अलग है. आप में कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ मेरे में खूबियाँ होंगी. आज सचिन है तो वो अपनी किसी स्किल की वजह से, अगर आज अमिताभ बच्चन है तो अपनी स्किल की वजह से. नो वन इज़ equal in the terms of skill. Everyone has blessed with one unique strength actually. The very good example as a movie we can take तारे ज़मीन पे, हम 3 इडियट्स को ले सकते हैं, जहाँ पर स्किल की बातें की गई हैं. जो आप में स्ट्रेंथ है, लेट अस टू जस्ट फाइंड आउट. सो मल्टीपल इंटेलिजेंस टॉक्स अबाउट दैट ओनली. द 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस इज वी हैव टू जस्ट गो विद दैट. व्हाट आर दोज 9? कोई बच्चा खेलने में अच्छा होगा, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, किसी बच्चे में नेचुरलिस्टिक स्किल इज मोर, सम किड्स माइट बी वेरी गुड इन म्यूजिकल स्किल काइंड ऑफ थिंग्स. सो एवरी स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, which in 21st century we need to understand that India is lagging in that, to understand what is multiple intelligence. So let us to bring into our education system, which many of the schools must be following, but parents also have to be involved into that to understand better. ये खाली बुक्स, टेक्स्ट बुक से दुनिया नहीं चलती है. आज की दुनिया में हमको स्किल पे ज़्यादा काम करना है. So this is the first thing which we need to bring in our education system. This is very, very important from the parent side, and obviously the teachers also should have that understanding. The second thing is encourage a proper system. When I talk about the encourage system, it means that here the proper bonding of a teacher, of a parent, and of the society for the upbringing of the kid. Generally what happen, अगर हम एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं, तो एक पेड़ को जब हमें बड़ा करना होता है, एक नर्चर करना होता है, तो वी नीड एवरीथिंग, अ प्रॉपर सनलाइट, फर्टिलाइजर, वाटर, टाइम टू टाइम एवरीथिंग इज नीडेड. बट जनरली व्हाट वी डू, स्पेशली विथ व्हाट हैपन्स इन आवर कंट्री, समटाइम्स सोसाइटी विल ब्लेम द किड. बच्चा वो अच्छा कर सकता था, आपने ऐसा क्यों किया. समटाइम्स द पेरेंट्स मे ब्लेम, माई किड हैज़ टू स्टडी मोर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट. Sometimes the teachers may blame, and what is happening nowadays we are just exchanging the blame. The teacher will blame the parent, parent will blame the teacher, sometimes society will blame both of them. So in this way our education system cannot be refined and cannot be identified where are we lagging. So here everyone need to take the responsibility, because हर किसी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना कि हमारा भी बच्चा उनमें से एक है. सो हर किसी को ये समझना है कि लेट अस टू ग्रो टुगेदरली, लेट अस टू अंडरस्टैंड दैट एवरी किड्स नीड्स अ स्पेशल अटेंशन वेयर एवरीवन हैज़ टू गिव द रिस्पेक्ट टू ईच अदर. पेरेंट हैज़ टू गिव द रिस्पेक्ट टू द टीचर, टीचर हैज़ टू गिव द रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स, एंड हियर द child also should understand the bonding between everyone for his and her growth. That's very, very important, which you could find in other countries, which is very, very, very is happening very well. So because of that, kid is understanding कि मेरे परवरिश में सब मिलकर काम कर रहे हैं. कभी कभी बच्चा भी एडवांटेज ले लेता है,
कभी टीचर्स को ब्लेम करके, कभी पेरेंट्स को ब्लेम करके. सो लेट अस टू जस्ट अंडरस्टैंड वी हैव टू क्रिएट द बॉन्डिंग encouragement system in our society when we go for the education. And the third thing is feedback system. I feel that in our education system, this is the lagging. Feedback system means a proper feedback. We have heard about the Bloom's taxonomy, which always talk about that the steps. We have to understand those steps, how to assess, how to evaluate, how to just present with lot of activity and all. So वो हायरार्की को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चा कोई चीज़ सीखता है, और उसके सीखने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका फीडबैक ऑब्वियसली थ्रू द असेसमेंट. It doesn't mean that only the pen and paper only. Feedback can be other many various type of activities can be considered into that. हमें ये समझना है कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है. तो ये चीज़ें भी जितनी जल्दी हो सके अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इस पे वर्क करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के पैटर्न को हम लेकर यहाँ पे आए, तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न में भी ये चीज़ की थोड़ी सी कमी है. हम जनरली वी विल जस्ट जज द किड हाउ मच मार्क्स दे हैव एक्चुअली हैज़ गेन इन द एग्ज़ाम्स, हाउ मच मार्क्स दे हैव स्कोर इन द एग्ज़ाम. दैट इज़ नॉट ओनली अ पैरामीटर फॉर द किड्स. We can just from here only we can just understand that how the kid can be measured by a different types of examination pattern. Like, why can't we can just assess with the public speaking skill? Why can't we can assess with the content writing? Why can't we can give the environment where the child has to go for the group discussion, a quiz kind of competition in the class? So what will happen when we encourage in our examination pattern these type of feedback rubrics? ये समझ में आ जाएगा. एक बच्चा बोलने में अच्छा नहीं है, हो सकता है लिखने में अच्छा हो. एक बच्चा लिखने में अच्छा नहीं है पर हो सकता है ग्रुप एक्टिविटीज़ में बहुत स्ट्रांग है. इन दैट वे वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. फीडबैक ऑल्सो वी अंडरस्टूड कि वेयर द चाइल्ड इज एडिंग मोर फीडबैक इन व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न, लिखने से, बोलने से या पार्टिसिपेट करने से. इन दिस वे वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ लीडर्स, लॉट ऑफ स्किल्स रिलेटेड किड्स एक्चुअली इन आवर कंट्री. सो लेट अस टू ब्रिंग दैट ऑल्सो. And which is very important for me, which I feel, see, when you or me, anyone, we feel very connected when someone comes and will tell some stories to us. So here, even in our education system also, whether at home when we teach, whether in the school we teach, if we will understand, if we go as a storyteller, it means if we'll bring their subject, when we bring their education with lot of empathy, sympathy, emotions, drama and all, and which can be connected with their real life experiences. That's the reason we used to say life skills are very important. They should understand why this subject is very important with their real life and how they can be connected. For that, lot of activities, hands-on activity, lot of real life experiments we need to do. So these are the few things which we need to work very strongly in our education system, so that kids could every child has to be connected with each topic, with each subject, where the child only should understand and student only should understand that where I am good at and why I am studying. So the why which is missing among all the students in our country, the reason is they don't know why are they studying, they don't know how it's connected to their real life, they don't know what is important for all these subjects. And here we have to work all out. So I hope that this topic has brushed up a little bit knowledge of where are we lagging in our country and how we have to resolve this.